students. This is the SST book of class 6, and we were discussing the first chapter of geography, which is our Earth in the solar system. And we'll now discuss the next topic of this chapter, which is motions of the planets. As we have already discussed about all the planets in the last class, now we will discuss that how the planets move and what type of motion they exhibit. uh, the planets exhibit two types of motion, and what are the two types of the motion? First one is revolution and second one is रोटेशन. अब हम लोग सबसे पहले रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन. According to the heliocentric theory, it is a theory, heliocentric theory, which is especially used for the the motion of the space. All the planets revolve around the sun. According to this theory, all the planets about which we have discussed, they revolve around the sun and they revolve in the same direction. And however, the period of revolution is different for each planet. जो पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज़ डिफरेंट फॉर ईच प्लानट. वाई? बिकॉज इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन. जो सन से प्लैनेट्स की डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा जो दूर रहता है उसको उतना ज़्यादा टाइम लगता है रिवॉल्यूशन करने में सन का. ईच प्लैनेट मूव्स round the sun in an elliptical path called orbit. And I have already discussed this thing that the planets revolve around the sun, move around the sun in an elliptical orbit, and that particularly that elliptical orbit is termed as elliptical path is termed as orbit. Since Mercury is closest to the sun, we have already discussed that Mercury is the closest planet to the sun. It has shortest orbit. Because its distance is short, it means that its orbit is short. If the orbit is long, if the distance is a long term period, then the orbit will be longest. The gravitational pull of the sun keeps the planet orbiting a fixed path, and the gravitational pull that is also present on the earth, also gravitational force that keeps the planet attracted towards the sun and they orbiting in a fixed path. Now the second topic is rotation. Each planet also rotates or spin on its own axis. We have discussed about revolution. Revolution का मतलब था कि वो चारों तरफ घूम रहे थे, बट रोटेशन का मतलब भी वही है, बट वो मूव नहीं करेंगे, अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे. दे विल रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे ही वो मूव करेंगे. The Earth axis is the imaginary line joining the North Pole and South Pole through the center of the Earth. And the Earth axis, we don't know that where it is present, but it is an imaginary line which joins North and South Pole through the center of the Earth. And except for the Uranus and Venus, except these two planets, Uranus and Venus, all other planets rotate from west to east. जो और planets हैं वो west direction to east direction move करते हैं, rotate करते हैं. The Earth completes a rotation in about 23 hours and 56 minutes, and Earth completes one rotation in about 23 hours and 56 minutes on its own axis. Now we'll discuss about the satellites. Its Hindi meaning is upagrah, and satellites are also small heavenly bodies. ये बहुत छोटे छोटे ये भी heavenly bodies होते हैं which also revolve around the planets, and planets revolve around the sun and satellites revolve around the planets. As the planets revolve around the sun, जैसे कि planets sun के around revolve करते हैं, I have already told you that satellite move with them. Satellite move करते किसके साथ? Planets के साथ. As a result, the satellites also revolve around the sun. It means that satellites revolve around the planet as well as the sun. जब उसके साथ मूव करते हैं, इसका मतलब प्लैनेट्स तो सन का सन को रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट प्लैनेट्स के साथ साथ अगर सैटेलाइट मूव कर रहा है तो वो भी सन का रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है.
Like planets, satellites shine by reflecting लाइट फ्रॉम द सन। प्लैनेट्स की तरह सैटेलाइट्स भी सनलाइट से के रिफ्लेक्शन से शाइन होता है। ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस, मर्क्यूरी और वीनस को छोड़ के सभी प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स हैं। अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज़ कॉल्ड मून, वी ऑल नो अबाउट द मून। And Jupiter's satellite is known as the Ganymede, and it is the largest satellite. The name of the Jupiter planet satellite is Ganymede, and it is the largest satellite in the space. Now we'll discuss about the moon. The moon is the largest and brightest object in the night sky. Moon जो है वो सबसे बड़ा और brightest object है night sky में, रात में. It is the only natural satellite of the earth, और ये केवल एक नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का. इट शाइन्स बिकॉज इट्स लाइट कलर्ड सरफेस रिफ्लेक्ट सनलाइट. ये चमकता है इस वजह से बिकॉज इसका जो लाइट कलर्ड सरफेस है वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन से चमकता है. एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून जो है वो अर्थ का रिवोल्यूशन करता है. इट्स शेप सीम टू चेंज एवरी नाइट, इसका जो शेप है हर रात में बदलता है. वी सी वेरिंग अमाउंट ऑफ इट्स सनलिट पार्ट, हम इसका अलग अलग सनलिट पार्ट देखते हैं, कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून. फेजेस ऑफ द मून में यू कैन सी द फुल मून once in a month, and after 15 days time when you see the full moon, that day is called Purnima, and after 15 days you can watch the night sky best because it is very clear and cloudless night, and this is called new moon night or Amavasya. And on moon there is no atmosphere, there are many mountains, plain and circular depression called craters on the surface of the moon. बहुत से माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और कुछ सर्कुलर डिप्रेशंस हैं जिनको क्रेटर्स कहते हैं. कहाँ, ऑन द सरफेस ऑफ द मून. वी कैन ओनली फाइंड रॉक्स एंड डस्ट ऑन द मून, हम मून पे सिर्फ हमें रॉक्स और डस्ट मिल सकता है. ड्यूरिंग द डे, दिन में इट्स टेम्परेचर इज़ अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस. इसका टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स इट्स द बॉइलिंग पॉइंट which falls to minus 15 degrees Celsius at night, and in night it is too much of cold means minus 15 degrees Celsius. In day it's too hot, and in the night it's too cold. Man has always been fascinated by moon. Man जो है वो हमेशा मून को देख के फैसिनेटेड हुआ है. स्पेस एक्सप्लोरेशन इन रिसेंट ईयर्स हैव ब्रॉट मेनी फैक्ट्स अबाउट द मून. जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है रिसेंट ईयर्स में, बहुत से लाइट एक्सप्लोरेशंस आए हैं रिसेंट ईयर्स में टू लाइट मेनी फैक्ट्स. बहुत से फैक्ट्स मून के बारे में पता चले हैं. इन 1969 में मैन्स ड्रीम गोइंग टू द मून केम ट्रू. 1969 में जब मतलब एक पर्सन का, एक मैन का चांद पे जाने का सपना जो था वो पूरा हुआ. कौन, किसने पूरा किया? एन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first man, and he was an American. He became the first man to walk on the moon. He walked on the moon. He brought back to the earth. He had brought some samples of lunar rock which suggests that moon has a dead surface, means moon is having the rock materials, and that is also dead rocks, means they are not fertile. Here it is a figure, here a figure has been given for the phases of moon. Here you can see that starting from the left side, starting from the bottom, first quarter, warning crescent के बाद first quarter, then waxing gibbous, then full moon, then waning gibbous, then third quarter started, then waning crescent, and the new moon. And these all the phases of moon occurs within a month. So that's enough for today's class. We'll discuss the next topic of this chapter in the next class. Till then, goodbye, take care, stay home, stay safe. Thank you so much, and don't forget to subscribe my YouTube channel.